Hello guys, welcome to the brand new episode of Robinson Show. Today I'm thrilled to introduce our guest, Ishita ma'am. Welcome you. Yeah, also. So, today we'll continue about the what ma'am is doing about his business and what is the business about, what he's running or she is running about the business. So, could you please tell us the business, what you have running business and what you have faced the challenge while starting our business, some little bit of background of your business. Sure. I run India's first aromatherapy inspired self care brand, which is called Arizu. We are into essential oils based self care rituals for physical, for skincare and wellness. So it is one of India's first, as I said, essential oils based brand. So there's been a lot of the journey's been long. It's been 2 3 years that I've been there, and have had a lot of highs and lows as you go along, to as you grow the business. So, So ma'am, yeah. what led you to start this business, ma'am? Means aromatherapy means how you have came to know about this. Like there's some problem in this market about this business. Yeah. So actually, when I had my first child, when I was pregnant with my first child, and I was in the corporate world. So post pregnancy, I was going through a lot of emotional and physical lows and highs, and my body was changing a lot. That is when I started reading through Pinterest and DIY and all of that. So I started reading about essential oils, aromatherapy, started using them. It was very beneficial for me, and that is how the journey started. I started sharing recipes with friends also. They liked it. So that is how the journey started. Motherhood brought aromatherapy into my life, and it's been part of my journey till now. Okay. Ma'am, this aromatherapy is some time of means like a is a problem disease or means something like a it is started in any means or is need after by some age only person need this type of therapy. Yeah. So aromatherapy is it's like a science like Ayurveda in India. So Mm-hmm. aromatherapy is a science of essential oils and smell. So anyone can use it. You can use it for kids as young as 6 years old, and you can also use it for people in the senior citizens. So it applies to everyone. It's more about the science and how do you use essential oils, how do you incorporate them in your daily lives. That is the whole concept behind it. So is this what means means I can also means use this therapies, if I'm Yeah, having yeah. some depressed or if having I'm like having some depression or somehow. See, aromatherapy, basically the whole concept is कि in aromatherapy you have a lot of essential oils which have different benefits and different values attached to them. So like if lavender is there, it has a fragrance which is very unisex, it is very calming. So lavender you can use for sleep, for relaxation. Same time, if you want to, you're feeling very sluggish, you're very tired, and you want something to wake you up and brighten you up, then you use citrus essential oils like lemon, lemongrass, orange. So these are all fragrances, and fragrances influence your mood, your physical, your emotional, and your mental well-being. And the way the fragrance of the oil would be, that is how your body will react. So that is the whole science behind it. So you need to understand what is your situation and what kind of an oil will suit you in that situation. Okay, like if some person is not new about this type of therapy is needed by them, then what will mean Hmm. like no like I was like what say due to lack of knowledge, person is not awareness about this product and something like this type of therapy is also available. If some person Yeah. is not new, then what will be the last means the problem faced by that person, facing by the person. So see, if you do not know about it, there are a lot of therapies, which we do not know about. Okay, so it's not that it's going to be the end of the world. It's the only thing that if you want to start off with something very basic, then lavender essential oil is something which is very basic, which you can start with. It's one of the most safest essential oils to use. So you can always start with that oil, use it. And there's a way of using essential oils. Google has information around it, that how to use essential oils, or you can take sessions, webinars by an expert, understand the right way to use these oils, and you can use it. So it's more like an alternative therapy, and it's not a substitute to your medical treatment that you're going through. We need to understand that it's more like an alternative therapy which you use for your own well-being.
Is there any misconception about like anotherapy therapy? Is there any misconception in market that what will add this what that will be the difficult problem? There are a lot of misconceptions. There are a lot of people who think that it is not effective. That how can smell affect a human being personality or well-being? How can smell heal a person? So there are a lot of misconceptions. There is confusion on how to apply essential oils. People apply it to the body, or am I supposed to use the whole oil, or am I supposed to use one or two drops? There are a lot of misconceptions and doubts. There is a learning curve that comes with aromatherapy and essential oils. You need to understand, you need to know properly how to use essential oils, and then only start using them in your lives. Because they can be a little toxic. They're not toxic, they're a little strong on your skin. So yes, I would say there are and it's very much like Ayurveda and homeopathy. It's like people might say, Ayurveda is not effective, homeopathy is not effective, and yet people are following those alternate therapies, and for the people it's beneficial. It's beneficial. So Yeah. you can't justify the other person's point of view. Wala baat hai. अलग बात है. So, Yeah. ma'am, somebody is right. Somebody is facing the problem, and then just you sell the product to them, or you just take a take some what's the classes about the online classes, and you are just explaining about how you are what you are facing. Then you are suggesting your product. So what? Yes. So what we do is I generally take webinars. I generally take a lot of classes and online webinars where I talk about aromatherapy, its benefits, how to use them, how to incorporate them in your lives. I also do paid consultations where if the person is facing very serious issues, then we do one-on-one conversations, and then majorly I recommend the products. That being said, the products are also sold independently too, but there's a learning curve, there's a way of application, and people kind of tend to mix up on what to apply when, and that's why we kind of go through this journey before selling a product. So, ma'am, I have one little confusion regarding means you are from medical background, or means you have just left your corporate job and you have just you have came to know. No, so I'm not from medical background. I left my corporate job. I did courses in aromatherapy, so I'm a Okay. clinical certified clinical aromatherapist. I've done healing courses. I've done all of these courses, certifications, diplomas, and that is when I developed all of these blends and came here. Okay. And ma'am, so do you how you source the product of this and you check the it what's ensure the quality and the sustainability of the product? Yes. How do you source? So I generally always source it directly from distillers, the farmers who make it, or I source it from very reliable resellers. They have a certificate of authenticity attached with each essential oil, where you have all the parameters, the technical parameters written. And I have been sourcing from so many vendors and been working with aromatherapy for so long that I can smell an oil. I can say, this is being synthetic and this is more on the natural side. So yeah, it's one side is experience, and the other side is of course reports and test reports that come along with the ingredients. So so one of you, ma'am, your best product, or you can say that most popular product you have suggested to your audience or your customer, which is more beneficial for them. So see, in skincare, there's one Radiance face oil which we have, which is very very famous among my customers, because it's an oil which can be applied for all skin types, for anyone with any age bracket. So that is one face oil. For in the wellness blends, there's a blend which is for sleep, which is a blend of lavender and geranium and bergamot, which is very very popular among my customers, and I have had a lot of people come back to me for the same. So yeah, these are the popular products which I have. Uh, how do you, ma'am, stay informed about the latest research and development? How you do, ma'am, like regarding the product, or is something about your in the niche? So I keep reading, I keep studying. There are a lot of online courses, international. There are a lot of international companies which keep doing courses on essential oils and aromatherapy. I enroll for them. There's also an institute called FFDC, Fragrance and Flavor Development Institute of the government in Kannauj, UP. You can also do courses from there. So I do online courses with them. I collaborate with them too.
So I keep searching, researching. I have to keep studying because this is a science which keeps evolving. And ma'am, you do you means manufacture this product from your own factory, or you outsource this product manufacturing? So what I do is I source my essential oils from different people, from distillers, but the manufacturing of the final product happens at my own factory. So we have an Ayush approved manufacturing setup in Lucknow. So it's GMP certified facility. So we manufacture the whole thing under our own brand, under our own company. And any ma'am, and you just only sell through the website and no any retail point and all thing right now, no any Right distribution. now we're selling through our own website. We're selling through Amazon. We are also selling internationally on Amazon, US, and other platforms. Only online means e-commerce platform and all thing. Yeah, e-commerce. And ma'am, your any means memory about the customer who have you can just share some memories what they have benefit after the using of your therapy product. Yes. So I've had a couple of customers, who had sleep issues, who got really help. The most important part is because the fragrance of the product is so good that people just come back and they say, what, last time it smelled a little different. This time it smelled a little different, but this was nice. So I have people whose pigmentation has got resolved completely thanks to using the oils. There are a couple of customers whose eczema got completely cured by using the oils. So I have had a lot of customers who had benefits and have come back to me with great reviews. What say about this in therapy method due to ma'am like nowadays ma'am what the lifestyle of person totally changed, so because of Mhm. this they are just getting affected by this type of problem, or like there is no that they just if person is doing regular exercise and having a regular maintaining his health, and that also then that person also requires like therapy. So see, this is aromatherapy is not like a therapy as such. So let's look at this. Psychological therapy is a separate thing. Aromatherapy is more products to be applied, products to be used in your environment. So we use the term aromatherapy. It's called the science. It's like very much like Ayurveda. So you eat medicines by Ayurveda. You apply Ayurveda creams. You use Ayurveda shampoos. Similarly, in aromatherapy, you use essential oils based products. So, what you can do is you can use essential oils as to diffuse in your room. You can mix essential oils in your skincare products. You can ingest essential oils also. And like you said, we can't blame our lifestyle at this point in time. There's of course stress. There's lifestyle. There is everyone is at a different stage of life. Every milestone is different for every human being, and however idealistic a life we want to lead, there are several other factors around us which do not let us do the right things. So we need to acknowledge that fact that everyone knows that we need to exercise, everyone knows that we need to wake up at 6 a.m. But if someone is doing a late night shift, he possibly or she cannot possibly wake up at 6 a.m. and see the morning I sunlight. cannot. I'm unable to wake up around 6 because I used to sleep late. Because Yeah. I used to do a job, and I after coming home job I used to work on my business, and I Yeah. used to sleep around later 12 or someday 12:30. So I so used to so wake up see, late. so it's circumstantial, right? It's very easy to say, we have to wake up at 6 a.m. If you have a late night shift, if you're working middle of the night, if you have a US shift, how will you wake up at 6 a.m. and watch see the sunlight? So yes, your vitamin D will go down. Yeah, So because of right now, because of winter also, I used to become laziness. I used to feel very yeah. But I yeah. after now actually I stay in north part of West Bengal. So Okay. now actually winter is going on. So let's see. I can understand. Yes. So basically, I ma'am, am. you belong from Lucknow or I am originally from Lucknow. My company's operations run from Lucknow, but I am based in Hyderabad right now. okay. So Miss factories in okay. Yeah. Ma'am, what is the goals and expression for the future of Miss aromatherapy business, ma'am? So my goal is that I want to take it to more and more people in India. Aromatherapy is a very new concept in India as such. So I want more and more people to understand and see the benefits of aromatherapy and essential oils and start incorporating them in their general daily lives. And hope that we I see it on every second household in India. So that is going to take a while, but yes, see hope to see that vision come true soon.
Ma'am, according to ma'am your survey, ma'am, what you have found that what percentage of means like is a male is more affected with this problem or a female is more affected with this problem? See, actually, both are effective in their own ways. Men have more mental issues, I would say. Women have more physical and emotional and mental issues. So it's both are affected in their own ways. Men. So what happens is in women, any physical changes are visible much more earlier and much more visible. In men, you have more mental issues. You have more emotional issues, and the physical things come out later, and that's why they both are on a different tangent altogether, but they both have their own challenges going through life generally. But most of the what they do not understand. They think, oh, I'm working, I'm doing a job, or I'm a housewife. So this Yeah. is my regular. So they do not know what to do right now. Means I'm facing some problem because in like in you go to tier three or tier four city, then you'll find that that some they are having a problem, but they do not know whom to discuss. They just Because we don't have the time and the bandwidth to acknowledge it. See, that's why it's because until unless in India, generally what happens is the situation, until unless it gets to that situation, where कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, till uh, then you try to postpone it. yes. Not that you don't know, you know it, you're well aware of it, but you have other priorities to look out for, and health becomes a last priority. So जब बिल्कुल give up हो जाती है situation, then you're like, okay, now there's no other solution left, let me just go to the doctor. I've taken 5 medicines myself, nothing working. And that, But at that time also मैम what you know that जाना है पर अब जस्ट एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो हाँ, नॉर्मल एक हमारे यहाँ पे जो जाने वाले लोकल के पे है जस्ट हाँ, तो एक तो जनरल फिजिशियन के पास आप जनरल जाओगे। फिजिक्स से बस हाँ, वो एक until नॉर्मल से unless that हाँ, then like that physician says, no, it's beyond my limit, go to that specialist. That also you will make your mind, okay, so let's go there and do it types. So that is a mindset in India generally. but it take time but I think what how much time it will take to change the mindset but right now can't say that yeah we can change the but See, you can't change. See, that's what happens when you why the over the counter Ayurveda and like for that matter, aromatherapy products are also getting popular. Is that this kind of helps prevents you from going to the doctor also, and you're trying to. I won't say prevents you. It's like it's an alternative medicine which you're trying to find for yourself, that मुझे डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े, but I'm able to solve this problem at my level till the time I can. So that is what essential oils and aromatherapy is trying to help you. Like if you're clinically depressed, we're not saying that we will help you sleep, because even if you have insomnia, I will help you sleep. We're not saying that. We're saying you need medical attention. Only thing is we are trying to help reduce that effect. We're just enabling that process a little more. That's what we're trying to do, making it a little easier for you. so ma'am how you are reaching to the audience ma'am means how you are doing how you do research for the audience and how you are doing the webinar that So I do online webinars only. We keep promoting on Instagram, we keep promoting on social media, we are part of a lot of communities, we could promote there. So the target market is majorly women above 35, 40. Well, they're going through the different transitions in life. I have a community of women myself. I run a WhatsApp group for them. So we do a lot of social promotions for these webinars, and we try to attract as many new audience as we can. mostly I think ma'am mouth to mouth marketing. Word of mouth. Mostly, most importantly, see, what I believe is that what happens is that if your product is good, हम्म if your brand is good, then वो अपने आप promote हो जाता है. एकदम 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 हाँ, अगर so आपका events, प्रोडक्ट में क्वालिटी है दम है हाँ, तो फिर वो अपने आप ही. And if it helps people, people will talk about it. या डेफिनेटली ये एकदम सही सही so Yeah. ma'am as a founder what challenge right now means we have already faced and you are just right now facing as and how you are overcoming of that. So see, I think what I've realized is that at every 6 months, every 2 months, you have a new face challenge to face. What I've observed is that get the right people on board who are an expert on that field. Because if you try to solve it yourself, first you learn, then you try to implement, and you mostly fail.
So instead of putting your own effort into it and trying failing, instead get an expert who's in that challenge, who's an expertise in that area. Work with them, even if it's for a short period, even if it's for a part-time basis. Understand the nuances and then go on from there. So that has really helped me overcome small roadblocks and move ahead. Otherwise, I'll be kept going around in the same circle always. या या मैम, जैसे कुछ लोग खुद ही पहले समझने को लगते हैं, खुद ही जानने लगे। अगर हम उन एक्सपर्ट को लेके साथ काम कर रहे हैं या उनको हायर कर रहे हैं या कुछ भी, तो उनसे हम भले शॉर्ट पीरियड के लिए हम भी कुछ सीख रहे हैं उनसे। हाँ, जैसे फेसबुक ऐड चलाना ना हम सीख सकते हैं। बहुत हुँ, सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, यूट्यूब है। आप जितना 4-6 घंटा उस ऐड को सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, उससे बेटर आप एक इंसान को ले आओ, उसके साथ बैठकर सीख लो, काम भी हो जाएगा और ऑन द जॉब आप भी सीख लोगे। वो सो भी है। मैं फेसबुक ऐड सीखना जैसे मैम इतना इम्पोर्टेंट, जैसे मैं खुद फेसबुक ऐड में रन कर लेता हूँ, मतलब मैंने हाँ, बहुत टाइम दिया हूँ, मतलब डिजिटल हाँ, मार्केटिंग करने में, सीखने में, मैंने कोर्स भी किया हूँ। और मैं हाँ, फेसबुक ऐड या गूगल ऐड या जो भी ऐड, मैं वो सीखना बड़ा बात नहीं, लेकिन उसको सही तरीके से ये करना सबसे बड़ा बात है। फेसबुक यस। ऐड, फेसबुक ऐड एक दूसरे एक तरफ से हो गया, गूगल ऐड एक कीवर्ड बेस ऐड है, हुँ, और फेसबुक आपके हुँ, ऑडियंस बेस ऐड हो जाते हैं। यस, ठीक है, यस, दोनों एक अलग है। आपको ये, इसमें आपको एक ऑडियंस बनाना है, एक में आपको कीवर्ड सर्च करते हैं, वही अब हाँ। उसमें ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये है। और ऑडियंस बनाने में ना आपको बोलेगा कि कोर्स आपको बता देगा सेट यू हैव टू सेट एज फ्रॉम 18 टू 60। हुँ। कोर्स ने तो बता दिया कि 18 टू 60, लेकिन आपकी एज ब्रैकेट क्या है वो बता सकता है जो एक्सपर्ट होगा फेसबुक ऐड में। आपको कौन सा टारगेट करना चाहिए वो एक्सपर्ट बताएगा, जिसमें आपने बहुत टाइम लगा दिया अपना ऑलरेडी। हुँ, हुँ। तो मैम, ये द प्रॉब्लम जैसे आपने ये जैसे फेस किए थे स्टार्टिंग में, पहले अपने खुद के ही लेके, तो इसके लेके आपने मैम किसी से, मतलब एनी डॉक्टर के साथ आपने किसी कंसल्ट पहले किए थे, या फिर डायरेक्ट इसके ऊपर आपने खुद का अपना पहले जैसे काम करना शुरू किए थे? नहीं, सी अरोमा थेरेपी एक्चुअली डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं। मतलब एज सच यू डोंट हैव डॉक्टर्स फॉर अरोमा थेरेपी एज सच। ओके। यू हैव अरोमा थेरेपिस्ट, और इंडिया में बहुत कम अरोमा थेरेपिस्ट हैं। आई डोंट थिंक देयर आर मेनी, दे माइट बी ऑन द फिंगर टिप्स लाइक 15, 20 और 100, आई डोंट नो। बट देर आर अरोमा थेरेपी स्पेशलिस्ट आउटसाइड इंडिया। तो मैंने बहुत कोर्सेज किए, मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैंने पहले सारे ब्लेंड्स खुद ही पे ट्राई किए। आई टेस्टेड देम फॉर माई सेल्फ, and that is when the final formulations started coming up, and I came down to those few fixed formulations which I thought, they are working for me. So yes, that is how it went for me. तो मैम, is that working means for, then this type of essence is working for the other age also, or other person means same type? So as I said, it depends on an individual. The same essential oil can work for a person. One essential oil can work beneficially for a person, or it can be trigger another person. So you have to test for yourself what is working for you, what is not. Like lavender can make someone sleep. Also, at the same time, lavender can be very exciting for someone and doesn't put them to sleep or give them migraines. So it's a trial and error, because it's a science of smell. So स्मेल से आपको क्या फील होता है, वो एक इमोशनल फीलिंग क्या निकल रही है, वो हर एक इंडिविजुअल की सेपरेट है. A floral fragrance will be a floral fragrance, like a rose fragrance will be a rose fragrance, but every individual will react differently to a rose fragrance. Someone likes it, someone says it's too strong, someone says it's too light, someone says ये मेरा favorite rose है, उसमें भी rose के 10 variety हैं. So how a person reacts to it is different. But at the same time, that being said, it will, if it suits you, if you like it always is beneficial for you for sure, because it's the power of smell. It goes to your brain cells, and gets that feel good hormones in your body. So concept वही है कि आपको सूट करता है, आपको कैसा लग रहा है, आपकी पसंद पे आ रहा है कि नहीं वाली बात है, and then it will benefit. Okay, ma'am, if somebody is facing with this problem, and then directly if somebody is buying the product or essential oil from the website directly without consulting anything with a doctor, Yeah, with you or someone, and directly they are yeah. just buying the product. If it's not suits them, then they will return the product and say no, ये तो suit नहीं हो रहा. Then what is the actual process there? So see, generally what happens is whenever you buy an essential oil,
One thing is very important कि never apply it directly on skin. Okay, essential oils are very concentrated, so never apply it directly on skin. Rather start with take a जो diffuser होते हैं ना, ये diffuser नहीं भी है आपके पास तो थोड़े से water में एक दो drop आप डालिए essential oil और उसको किसी मोमबत्ती के ऊपर या just light it up so that it warms the water and the fragrance goes out. If the fragrance, if you smell in the fragrance from the atmosphere and you like it, then and it you think कि आपको उससे headache नहीं हो रहा या आपको soothe कर रहा है, then it suits you. If you want to apply it on skin, mix it with a carrier oil. आप always आप एक स्पून में वन या एक स्पून कोकोनट ऑयल ले लो, आलमंड ऑयल ले लो, सेसमे ऑयल ले लो, कुछ भी उसमें वन या टू ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल डालो एंड देन अप्लाई इट ऑन योर स्किन एंड डू अ पैच टेस्ट. Apply it one part of your skin, see for 24 hours कि कोई reaction तो हो नहीं हो रहा, and then you can easily apply it, mix it in any product and use it, but never use essential oils directly on skin without mixing it with a carrier oil or water or a moisturizer or something. So that is one of the very important things to remember with essential oils. So, ma'am, in market in the departmental store, what we see that in the cosmetic section, what we see that some is selling the product like saying that essential oil and all thing like, and one oil I just forget the name is like a yellow bottle, round shape. What's it? Just I forget the name, and so if that's also means like just selling the this name with essential oil or just there's is something is beneficial from that. So, no, see, there are a lot of brands of essential oils. If you'll go on Amazon, there are a lot of brands of essential oils. So, it eventually depends who's distilling it, what is the quality of the essential oil, is it synthetically made, is it real? So, essential oils, say, making an essential oil from a flower is a very lengthy process. It's a very costly process. So, a lot of brands do synthetic. What they do is they create the synthetic version of the same essential oil, and what you see in the market a lot of times, you see synthetic essential oils, you don't see the real essential oils. So it can say it's benefiting you, it can or it cannot or whatever. So the quality of essential oil makes a huge difference. So the benefit will depend on how what quality of the product it is and who is distilling it and how is it coming, the source. Actually, the So main that pro actually what the what ingredients required to make this essential oil, a lot of person do not know about that. Actually, they do not research, they do not knew about. So while they go purchase any in the market or online, just they see the review. What is the review? What they are saying? yeah. Just they buy it. But they if they see the what is ingredient has been required to make this product. Just So you see, essential oil is one. Like rose essential oil comes from rose ka flower. Okay, lavender comes from lavender bird. But okay, cinnamon will come from cinnamon bark. But what happens is कि आप rose के bud को, even if it comes rose essential oil का example I take you, if you take rose petals, you will boil it, they will steam distill it, and there will be vapors coming out. उसमें से जो थोड़ा oil निकलेगा ना, शायद 5 या 6 किलोज में से इतना सा essential oil निकलता है. So the essential oil ka original rose essential oil is above lakh rupees per okay, kg. So in the market, you'll not get original essential oil. If you're getting a rose essential oil of 10 ml in 300 rupees, it's not real. Okay, it's taken, it's not real because no one is going to buy it in the market. No one is going to sell it. What generally brands do is they create a chemical substitute of the same essential oil. They pick up the substitutes of each individual ingredient, that chemical constituents जो होते हैं वो chemically derive होते हैं, means and they create artificially कुछ use कर रहे हैं. आर्टिफिशियली derive करके इंड्यूस करके फिर वो मार्केट में आपको 400 रुपए का रोज एसेंशियल ऑयल 10 ml बेच देंगे. बट इट्स नॉट रियल. That's not authentic. So there's a lot of things behind the essential oil market as such. Actually, What is being, एक्चुअली ऑडियंस जो ये कस्टमर है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि वो नहीं समझ पाए. एक्चुअल That अगर is जैसे आपने बताया कि एक्चुअल जो रोज के जो एसेंशियल वाले थे वो लाख रुपए में ऊपर जा रहे तो तब तो वो वो किसी हर हाँ किसी को कौन जा थोड़ी सर्च करने की रोज एसेंशियल ऑयल कितने का मिलता है, लाख रुपए का मिलता है कि 4 लाख का मिलता है. तो मैम सो बट जो लेवेंडर जो एसेंशियल ऑयल तो वो भी अराउंड इसी कुछ कॉस्ट में बैठते होंगे मतलब जो एक्चुअल जो लैवेंडर आपको पड़ता है 15 से 20,000 तक का. And the same substitutes come from the range of 2000 to 10,000.
the different substitutes of lavender essential oil, the natural substitutes of it, they can come in 2000 also, they can come in 5000 also, they can, it all depends कि आपने कौन से chemical constituent उठाए हैं, उसकी quality कैसी है, how much of those parameters have you incorporated in the chemical substitute. तो मैं एक्चुअली जो ओरिजिनली जो एसेंशियल ऑयल जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं कंपनी मैन्युफैक्चरर जो है, तो उसके लिए तो उन्हें तो काफ़ी रोज़ है, लेवेंडर है, जिनके रिक्वायरमेंट होते होंगे। तो वो तो काफ़ी हम्म. हद में तो उनका मतलब ये कर रहे हैं, उसको प्रोक्यूर कर रहे हैं फैक्ट्री से या जो Yeah. गार्डन से ये कर रहे हैं। तो उसमें तो एक टाइप का तो मतलब उन्हें भी तो प्रोडक्शन के लिए तो वो भी तो एक्चुअली कुछ केमिकल यूज़ कर रहे हैं ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़े। या ऑफ कोर्स. मतलब दे आल्सो रियलाइजिंग इट, दे आल्सो अंडरस्टैंड कि मतलब मैं 4 लाख रुपए का रोज बेचूंगा तो कौन खरीदेगा. सो उनके लिए भी वे एवरीवन सी, नो वन इज सेइंग कि उसका केमिकल डिराइव्ड वर्जन खराब है. Again, same thing is, it's very much like ki making any medicine. Okay, you create a medical version of the same type की मेडिसिन अलग अलग ब्रांड की अलग अलग इफेक्ट करती है, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो केमिकली डिराइव्ड फॉर्मूला उसका कैसा है, उस पे बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं. सो लैवेंडर का केमिकली डिराइव्ड वर्जन भी अच्छा है. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर अ पर्सन. इट ऑल डिपेंड्स कि उसने, अगर लैवेंडर के 4 कंपोनेंट्स है, लैवेंडिन एंड अदर थिंग, एंड 4 कंपोनेंट्स है, उसने कौन सा कंपोनेंट उठाया जिसको ज्यादा रखा, उसका सूदिंग एस्पेक्ट ज्यादा रखा है या उसकी फ्रेग्रेंस एस्पेक्ट ज्यादा रखी है. So the chemical derived version also has different varieties and will have benefit to people for different varieties. So it's a very complex science, marketing, business. There are a lot of aspects involved in it. मैम आपको बस एक किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना कि इंडिया में ऐसा कुछ ब्रांड है जो इतने लाख में बेच रहे हैं ये माल प्रोडक्ट इस टाइप में So कुछ। so see, इंडिया में जो ब्रांड्स है ना, तो रोज का एसेंशियल ऑयल ना कोई, आई डोंट थिंक एज अ रिटेल में बेचता है. व्हाट दे डू इज दे यूज इट इन परफ्यूम्स, दे यूज इट इन इतर्स, दे यूज इट इन फाइनल प्रोडक्ट्स जो कि आपको प्रीमियम पॉइंट पे मिलेंगे. तो रोज का एसेंशियल ऑयल आई डोंट थिंक कोई अलग एक्सक्लूसिवली खरीद के मार्केट में ना बॉटल करके बेचता होगा. आई डाउट इट. इट्स वेरी मच लाइक रोज, सैंडलवुड, ये 2-3 एसेंशियल ऑयल्स हैं, जैस्मिन, जो इंडिविजुअली आपको बहुत कम मिलेंगे मार्केट में टू बी सोल्ड ऑन रिटेल. But they're used in products, they used in perfumes, they used in aetars, they used in premium products, जहाँ पर ये यूज एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं. अब मैम जो आलमंड ऑयल जो मतलब मार्केट में जो अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी तो आई थिंक मतलब कि वो भी एक अलग एसेंशियल ऑयल में बोलते हैं या उसको मीन्स हम लोग वो नहीं वो कैरियर नॉन ऑयल्स, जनरल ऑयल्स वो था। वो कैरियर ऑयल्स होते हैं. आलमंड, जजोबा, coconut, sesame, these are all carrier oils. These are oils which are used as base for essential oils. सो एसेंशियल ऑयल आपका 2% होगा और 98% आपका आलमंड होगा या कोकोनट होगा, इस टाइप से रहता है. ओके मतलब बड़े कंपनी में तो इसे मिक्स करके मतलब थोड़े से इस परसेंट को लेके हर चीज में या चाहे वो मतलब हाँ, जो भी मिक्स एंड मैच होता है वो, मतलब एसेंशियल ऑयल्स का कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल किसी भी फॉर्मुलेशन में 10% के ऊपर नहीं होता. दे सो कॉन्सेंट्रेटेड एंड दे सो स्ट्रॉन्ग. तो मतलब इससे मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी के हेल्थ में या फिर किसी को जान भी जा सकती है इस ऑयल से अगर वो ना। इतना नहीं नहीं, जान नहीं जाती, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता. इट्स नॉट दैट. इट जस्ट इट कैन बर्न योर स्किन. आपको स्मेल से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं, दे नॉट टॉक्सिक, दे नॉट टॉक्सिक ओके टू योर हेल्थ. मुझे भी आज ही पता चला कि इस मतलब इस टाइप के भी कुछ है मतलब मैं तो मुझे लगा था कि एक थेरेपी है चलो एक ये होते हैं लेकिन इतना डिटेल में मतलब अभी पता चला कि ऐसा भी कुछ है बहुत। आई एम सेइंग दैट इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया, और बहुत जनरली बहुत कम, अब धीमे धीमे करके वो बिल्ड हो रहा है इंडिया में. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एजुकेशन दैट नीड्स टू गो इन द बैकग्राउंड फॉर पीपल. आप अभी भी अमेजोन में जाओगे, आपको कम से कम 50 ब्रांड्स मिल जाएंगे एसेंशियल ऑयल्स की, ranging from the price of 200 to the price of 1000 for the same product, for the same ingredient. लैवेंडर का एसेंशियल ऑयल आपको 250 रुपए का भी मिलेगा, आपको 1000-1500 का भी मिलेगा. पर एंड यू विल लाइक, सेम चीज है ये तो. पर एक्चुअली में ऑडियंस को जानना या कस्टमर को ये समझना ही बड़ा मुश्किल है कि कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। जैसे अब हमारे मार्केट प्लेस अमेजोन हो फ्लिपकार्ट हो या चाहे अपनी वेबसाइट है तो बहुत सारे पेड रिव्यू आ जाते हैं। जैसे मेरे पास ही बहुत लोग ने मुझे मुझे टेक्स्ट करते हैं कि ये अमेजोन में पेड रिव्यू के लिए ठीक है। या तो हम लोग तो एक्चुअली वो तो कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं एक्चुअली पहले मुझे भी नहीं मैं जब रिव्यू देता था 25,000 30,000 रिव्यू मुझे लगता अरे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसमें बहुत रिव्यू है। लेकिन जब मैं इसके पीछे का साइंस देखने लगा अरे ये तो
सब तो पेड रिव्यू चल रहा है इसके पीछे। सी मैक्स आपको बेनिफिट क्या करेगा ना, इसका ना जवाब बहुत वो है कॉन्टेक्चुअल। सी द होल थिंग इज कि बहुत बार क्या होता है ना हमें जैसे टूथपेस्ट का मैं एग्जांपल लेती हूँ, बहुत सिंपल। किसी को पतंजलि का टूथपेस्ट सूट करता है, किसी को सेंसोडाइन सूट करता है, तो किसी को मिसवाक अच्छा लगता है, तो किसी को डाबर अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक इनमें से कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट ना किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। लेकिन किसी को लगता है कि मुझे दंत कांति से सेंसिटिविटी कम होती है, कोई बोलता है मुझे सेंसोडाइन से सेंसिटिविटी कम होती है। इंसुलेंस जो यस। नेचुरल वाला जो नेचुरल वाला है वो कहता है नहीं नहीं मेरा दंत कांति अच्छा करता है। दूसरा वाला जिसको डॉक्टर्स और डॉक्टर वाली थेरेपी पे ज्यादा विश्वास है, नहीं मेरे सेंसोडाइन मेरी सेंसिटिविटी कम कर। No, you don't know what is benefiting you or what is not benefiting you. I think it's more about psychology. uh, the only thing that works is the brand authenticity. You trust these brands. अभी वही ट्रस्ट हम, हाँ, बिल्कुल। वो ब्रांड्स ने इतने टाइम तक ये ट्रस्ट बिल्ड कर लिया कि हम आपके पास जो भी पहुंचा रहे हैं इट इज गुड क्वालिटी। इट माइट नॉट बी द बिल्कुल रियल, बट इट इज नॉट दैट समथिंग इट विल बी टॉक्सिक टू योर लाइफ। सो इवेंचुअली यही हो जाता है कि हाउ मच डू यू ट्रस्ट द ब्रांड। हाउ वो, हाँ आप सही बोल रहे हो, 25,000 रिव्यू है, 26,000 रिव्यूज है, लेकिन वो कुछ सालों में एवरी ब्रांड हैज बिल्ड दैट ऑथेंटिसिटी, दैट ट्रस्ट एंड एवरीथिंग। तो कुछ ब्रांड्स को आप ट्रस्ट करने लगते हो। तो एसेंशियल ऑयल्स और अरोमा थेरेपी में टाइम लग रहा है। देर आर न्यू ब्रांड्स विच आर कमिंग अप। देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो कर रहे हैं सालों से, जिनके पॉपुलैरिटी नहीं थी बट अमेजोन में बिक रहे थे सामान। तो वो इवेंचुअली इट ऑल बिल्ड्स डाउन कि वो बैंड ने कितना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। और अगर उसने 25,000 रिव्यू के लिए पैसा दिया है तो कहीं ना कहीं मेहनत तो करी होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए भी। 25,000 रिव्यू बनाने के लिए भी उसने सेल इतनी करी होगी कि 25,000 वालों को रिव्यू के लिए पैसा दे पाए। नहीं सो वी एक्चुअली, हैव टू। एक्चुअली डायरेक्ट तो हम मतलब अमेजोन के कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, हम अपने कांटेक्ट में जितने होते हैं या फिर एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं कि रिव्यूज के लिए गाड़ी। तो हाँ, ये एक सो बहुत मैं बड़ा आई एम सेइंग कि अगर किसी ब्रांड ने 25,000 रिव्यू के लिए पैसा दिया, लेट्स अज्यूम, ओके, व्हाटएवर, सो दे मस्ट हैव हैड सो मच ऑफ सेल्स कि वो 25,000 रिव्यूज का मार्केटिंग करने का बजट निकाल पाए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं 100,000 कस्टमर तो उसने ऑथेंटिक बनाए होंगे, एकदम कि एकदम। उससे उसका वर्ड ऑफ माउथ होकर के उसका बिक रहा है सामान, ताकि वो इन एजेंसीज को पैसा दे पा रहा है। जिसका कुछ नहीं बिक रहा, वो उसके पास पैसा ही नहीं है एजेंसी को देने के लिए। एक्चुअली सब सब कुछ एक्चुअली यही है कि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अराउंड 5 और 6 ईयर से मैं एक सोप जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे एक केमिस्ट ने सजेस्ट किए थे। उसके बाद से मेरे माइंड में ये बैठ गया कि मैं वो छोड़ के कुछ और यूज़ ही नहीं करता हूँ। हाँ, हाँ, नहीं करता इंसान तो ब्रांड लॉयल्टी। वो एक एक्चुअली स्किन प्रॉब्लम सोप है, जो मैं एक्चुअली वो हर जगह वो अवेलेबल नहीं, आपको कोई केमिकल ये शॉप में अवेलेबल नहीं होगा, या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे वो अवेलेबल होते हैं। हर वक्त वो अवेलेबल भी नहीं रहते उस जगह। तो अब मेरे माइंड में ये हो गया कि नहीं, मैं ये छोड़ के कुछ और यूज़ नहीं करूँगा। So that's brand loyalty. See, eventually it all comes down to brand loyalty. तो ये एक्चुअली सबके माइंड में एक्चुअली ये हो ही जाते हैं कि ये छोड़ के हाँ, नहीं, मेरे लिए यही ठीक है। यही ठीक है। वो ब्रांड लॉयल्टी, वो वही चीज सब चीजों में वही है कि ऑथेंटिसिटी। आप कस्टमर को क्या फायदा करेगा नहीं पता, लेकिन कस्टमर जिस ब्रांड को ट्रस्ट कर सकता है, उसको लगता है कि ये ब्रांड ट्रस्टेबल है, ये ब्रांड जो बोल रही है वो सही बोल रही है, तो फिर उससे लेगा और फिर उसका कस्टमर बना रहेगा। एक्चुअली ये सब एक बार ये यूज़ करके अगर वो उसको सूट कर गया तो वो फिर वो चेंज नहीं करेगा उसको लिए। वो फिर चेंज नहीं करेगा। अग्रीड। वही प्रॉब्लम। तो मैम तो ये मैम अवेयरनेस के लिए रिगार्डिंग जैसे इस एरोमा थेरेपी के, तो किस टाइप से मतलब अगर किसी को करना है, बताना है कि हाँ कि ये थेरेपी यूज़ कर ये या ले, तो किस हिसाब से मतलब बताया जा सकता है किसी को भी हम। सी अगर किसी को यूज करना है, मैंने वही बोला, एज अगर आपको जनरली अपनी लाइफ में ना एरोमा थेरेपी एसेंशियल ऑयल स्टार्ट करने हैं, तो सिंपल सबसे सेफ एसेंशियल ऑयल स्टार्ट विद इज लैवेंडर, या तो जेरेनियम, या आप सिट्रस में लेमन ग्रास ट्राई कर सकते हो। लेमन ग्रास, ओके, लैवेंडर, जेरेनियम, लेमन ग्रास, ये तीन आपके बड़े सेफ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा और नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब जा सकते हो। देर आर लॉट ऑफ videos on essential oils, on aromatherapy, how to use them in daily lives. बहुत सारे वीडियोस है। इफ यू वांट अटेंड अ वेबिनार, प्लीज आई विल सेंड अ लिंक, आप मेरी वेबिनार में आ जाना नेक्स्ट, आई टेल यू अबाउट दैट।
बट अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ एजुकेशन अवेलेबल ऑनलाइन। इंडिया में कम है, इंटरनेशनली आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे। आपको और पढ़ना है तो जैसे मैंने कहा FFDC जो कन्नौज में गवर्नमेंट का, वो भी सिखाता है। देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, टेसरेंड इंस्टीट्यूट, एंड देर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो अरोमा थेरेपी की साइंस और सब कुछ, हाउ टू अप्लाई एंड एवरीथिंग पढ़ाता है। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अभी तो मतलब पूछने के लिए यूट्यूब हर चीज के लिए जिंदाबाद है। एक सब के पास, उसके पास हो, उसके पास। एक्चुअली एक्चुअली इंडिया में अभी एक्चुअली हेल्थ को लेके या मतलब मेडिसिन कुछ भी लेके ये बहुत अभी मतलब बोल सकते हैं कि अभी काफी पीछे, लेकिन हाँ ऐसा एब्रोड या फॉरेन में देखे जाए तो ये सब चीज को लेके लागू काफी अवेयरनेस है उस एरोमाथेरेपी को लेके रिगार्डिंग। इंडिया में व्हाट वी फील इज कि नो पीपल अराउंड अस विल हील अस। सो हम फैमिली कॉन्सेप्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं दवाई से ज्यादा। तो सो वो दैट, वो चीज से ज्यादा चलते हैं हम कि अरे ये खा लो, वो कर लो। हमारे चलते फिरते सब लोग डॉक्टर है हमारे आसपास, इसलिए। हम लोग एक्चुअली काफी लेट विजिट करते हैं, मतलब लास्ट स्टेज जब हो जाते हैं तब जाके देखते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ है। जैसे हाँ, तो आपके मैं बोलूँ आपको एसिडिटी भी होगी ना, तो अगल बगल में सब आएंगे, अच्छा हींग खा लो, अच्छा इनो पी लो, हींग खा लो, दही खा लो, सब कुछ हो जाएगा। और फिर उसके बाद लगेगा ओके नहीं ठीक हो रहा, लेट्स गो टू द डॉक्टर। एंड फिर पता चलेगा कि अच्छा नहीं, थोड़ा सिचुएशन बिगड़ चुकी है, तो वाली चीज है। लॉट ऑफ मेंटल एस्पेक्ट्स टू इट। ma'am, if somebody wants to contact you, how they were reaching, what is the process? Yes, so my website is www.razoo.in. उसमें आप जाओगे तो कंसल्टेशन का टैब मिलेगा। There are two options there. You can attend my upcoming webinar, or there is a personal consultation option also. You can go there and reach out. If you want to drop an email to me, then I am available on connect@razoo.in. So ओके। ये दो options. मैम आरुजू का इसका कोई स्पेसिफिक नेम है मैम? आरुजू। Arzu is the original Persian word of arzu. तो आरजू वर्ड सुना है आपने, उसका ओरिजिनल पर्शियन वर्ड है आरजू। तो ये, सो इट्स ऑल अबाउट फुलफिलिंग योर डिजायर्स, fulfill your desire of health, healing, and happiness. That is what RSU stands for. ओके। तो आज एक्चुअली एरोमाथेरेपी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला एक्चुअली इसको लेके। मुझे लग रहा था जैसे मैम पहले मैंने जो सोचा था कि ये एक्चुअली ये मेनली हाउस वाइफ जो मतलब आफ्टर जो प्रेगनेंसी के बाद उनके काफी सारे चेंजेस होते हैं उनके बॉडीज में, हेल्थ गेन कर लेते हैं, काफी फैट हो जाते हैं। तो एक्चुअली मुझे मैं कुछ इस टाइप सोचा कि नहीं शायद मतलब इस टाइप का कुछ हो रहा था कि उन्हें हेल्दी ये करे या उन्हें कंट्रोल करे। नहीं, so see, as I said, essential oils is all about physical, emotional और mental benefits. तो प्रेगनेंसी हो गई, मैं वाई आई टारगेट वुमेन मोर इज, जो आपने जैसे बोला ना कि औरतें एज सच अपनी हेल्थ पर बहुत कम ध्यान देती हैं, एक बिकॉज दे टेकिंग केयर ऑफ एवरी वन अराउंड। तो अरोमा थेरेपी एंड एसेंशियल ऑयल्स एक बहुत सिंपल तरीका है अपने आप को खुश रखने का, जो मैं बोलती हूँ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। तो स्पेशली पहला जिंदगी का आपका जो मेजर ट्रांजिशन फिजिकली होता है वो है प्रेगनेंसी। जब आप बच्चा होता है उसके बाद ना बिल्कुल ही एक नया जिंदगी शुरू हो जाती है, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसके बाद पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, और फिर उसके बाद लाइफ गोज ऑन एंड दोस ट्रांजिशंस गोज ऑन। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि इनकॉर्पोरेट एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा थेरेपी आपके सिंपल सेल्फ केयर लाइफ में। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको किसी से जाके कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सवाल नहीं पूछने, बस 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए निकालना है। इसेंशियल ऑयल्स आप डिफ्यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, क्रीम्स में लगा सकते हो, ऑयल्स में यूज कर सकते हो, अपने नर्व पॉइंट्स में एज अ वेलनेस ब्लेंड लगा सकते हो। तो आपको फिजिकल और इमोशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, उससे आपकी हेल्थ ओवरऑल सही रहेगी। और जो क्लिनिकली हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वी नॉट डिनाइंग दैट फैक्टर। हम्म। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट जैसे मैं बिहाइंड अपने आरएसओ। ये एक नर्व्स बारे बात बताया एक्चुअली मेरे मम्मी को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे उनको कुछ नर्व्स में मतलब एक प्रॉब्लम रहती है, जैसे कुछ जैसे लगता है कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं। तो कभी कभी उनको मतलब उस टाइप के कुछ मतलब ये होते हैं, कभी लगता है जैसे उनको करंट फ्लो कर रहा है और वो बोलते हैं मेरे राइट। नर्व्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैम इन्हें भी मतलब ये सब मतलब यूज कर सकते हैं ये ऑयल्स को लेकर? हाँ, यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ऑफ कोर्स इट्स अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हम्म। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो नर्व पॉइंट्स में मैं जो बोल रही थी, ये जो आप रिस्ट देख रहे हो, हम्म। यहाँ लगाते हैं एसेंशियल ऑयल्स। सो यहाँ पर ना, एंड व्हाट यू विल डू इज स्मेल।
या आप सोते समय अपने पिलो कवर पे डाल सकते हो, और आप जब सोओगे तो वो उसकी फ्रेग्रेंस आपकी जाएगी। तो व्हाट हैपेंस इज, जब वो फ्रेग्रेंस आपकी नोज से ऊपर जाती है वो ब्रेन सेल्स में जाती है, एंड इट रिलीजेस स्लीप हार्मोन्स, इट रिलीजेस रिलैक्सेशन हार्मोन्स। तो वो आपके डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, तो यू कैन इजिली यूज इट, एंड इट हैज नो साइड इफेक्ट्स। ओके मैम, मुझे एक बार लिंक भेज दीजिएगा मैम एक्चुअली ऑयल्स के। हाँ, मैं बिल्कुल भेज दूंगी, बिल्कुल, फॉर श्योर। जी। तो मैम रिगार्डिंग मैम कुछ लास्ट एक तो हम रैप अप करते हैं अभी इसको लेके, कुछ लास्ट गिव अवे मीन्स कुछ ये बोले कि जिसके रिगार्डिंग मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग मतलब कुछ एक शॉर्ट एक ब्रीफ कर दें एरोमाथेरेपी के ऊपर। सो आई थिंक व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि देखिए, लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, एवरीवन इज रनिंग, एवरीवन हैज स्ट्रेस। if you can just take 5 minutes in the morning out for yourself and 5 minutes in the night for out for yourself, um, and do anything to keep yourself happy, be it essential oils, be it meditation, be it exercise, be it just journaling, just 10 minutes in a day for yourself to relax your mind away from every possible responsibility around you, you will be healthier overall. वो आपको खुद भी रियलाइज नहीं होगा, महीने भर आप बाद आप एक ज्यादा खुश और ज्यादा हेल्दी इंसान निकलोगे, अगर आप सिर्फ दिन भर में 10 मिनट अपने लिए निकाल लो। सो आई थिंक दैट इज माई मेजर टेक अवे। यू कैन यूज इन अरोमा थेरेपी, यू कैन ट्राई एसेंशियल ऑयल्स, यू कैन ट्राई राइटिंग, यू कैन ट्राई एक्सरसाइजिंग, यू कैन ट्राई एनीथिंग, लेकिन 10 मिनट दिन के अपने लिए जरूर निकालने चाहिए। सो यस, दैट इज माई फाइनल गिव अवे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मैम वैल्यूबल इंसाइट्स। So, ma'am, we'll catch you in next our next success story in your next episode. So, फॉर श्योर। so thank you, ma'am, for coming and just joining and just giving you a brief about the aromatherapy, the concept of what is the thing, how they beneficial for the health and everyone. So, thank you, ma'am, for joining us. We'll meet you in next episode. थैंक यू, बाय बाय। Bye.